Hello guys, welcome back to my channel again. Hope you are doing well so far. So today I'll be sharing with you what all I have purchased from Nykaa, or to be more specific, what I all restock from Nykaa. So let's start the video. Okay, so we'll start with our underarms roll-on must have in summer. This is from Chemist at Play. Alright, and then we have sunscreen in the house. This is from Rhythm Earth sunscreen. Okay, तो fascinating चीज़ तो मुझे इसमें लगी इसका नॉजल. सबको नहीं लगता ये fascinating ऐसा वाला नॉजल, बट मुझे अच्छा लगा. I like it. Okay, so this is amazing. And then we have another sunscreen that is from the Derma Co. 1% hyaluronic sunscreen aqua gel. Amazing, amazing. Blends like speechless. Huh? Then we have, then we'll go to our serum section. Foxtail serum from Niacinamide. The very hyped serum that is from L'Oreal. I hope it visible to you. Okay, so this is hyaluronic variant, hyaluronic acid. And then we have moisturizer. I bought two moisturizer. The Cetaphil one must have. Okay, so the thing about Cetaphil, if you are more into oily skin, so I think you should skip this in summers, but you have to try this in winter. But अगर आप combination skin के हो, so you can also use in summers. This is Cetaphil, CeraVe, Cipla. ये तीन ब्रांड ऐसे हैं ना, like side effect ना के बराबर होते हैं, obviously होंगे, but ना के बराबर, and works like wonder, right? And second lotion, I have the niacinamide variant again, right? And then I have the Plum का vanilla body oil. ऐसा आपको मंत्र मुग्ध कर देगा ये body oil. And then we have the intimate wash. Personal intimate hygiene is must. So this is from Namya. Namya ka, this is Haldi Chandan variant, right? So Namya ke, I love this wash, intimate wash. Tried the V wash जो very famous in market, वो भी मैंने use किया है. C wash market में as such available usually नहीं होता, but I've tried that also. But when I got my hand on this, Namya का ये एक YouTuber हैं, उन्होंने suggest किया था. And when I got my hand on this product, like I cannot explain you वो जो stinkiness, एक sweatiness, वो जो होता है ना intimate वो हमारे area में, all in one solution. Try once. It's not costly. It is around 200-300, somewhere between 200-300. Okay, so you can try once. This is my point of view. And then we'll jump on to our perfume section. That is जो section, तो मैंने ऐसे बोला perfume जैसे मैंने 3-4 perfume लिए होंगे. Okay, by the way मैंने लिए थे, but अपनी sister को दे दिया एक. So this is my favorite. Currently I'm obsessed with this perfume that is from Bath and Body Works. Japanese Cherry Blossom. Okay, alright, so we'll jump on to our patches. We have the nose strip, we have acne patches. This is something must have. This is a kind of must have. The nose patches, the acne patches, the intimate wash, this is must have, right? So these are the must haves. This is acne patches. Though अब मुझे उतने नहीं होते acne. When I was in my we can say 18 से
22 तक की एज में बहुत ज़्यादा हुए, इरिटेटिंग थे यार सीरियसली। मेरे वाले तो बहुत इरिटेटिंग थे। मतलब ऐसा होता है ना कि पिंपल होता है, पेन होगा या जो भी उसके अंदर से म्यूकस होगा, मेरा ऐसा नहीं होता था। मेरा पिंपल होता था, चला जाता था और वो स्पॉट दे जाता था। दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। Okay, so come to the point. That next is hair removal cream. Usually I use hair removal cream और sometime जो strips आती हैं on my intimate area. So this is for that. Again from Namya. Namya के कुछ product ऐसे है ना, उनका compete ही नहीं है जितने अभी हमारे hyped वाले brand चल रहे हैं. Please ignore the background noise. Okay, so next is underarm whitening cream from Quora. So Quora ka underarm cream, it works like wonder, right? Okay, so there is a scenario. जब मैंने 2 से 3 बारी आउट ऑफ एमरजेंसी मेरे को रेजर यूज़ करना पड़ा मेरे अंडर आर्म्स में, which turned into this section that I have to use now, this to rectify that darkness. And believe me, अपना काम संपूर्ण रूप से कर रहा है ये. Okay, now we have Faces Canada का, this is not lipstick, this is सिंदूर, my सिंदूर. Whenever I रेडी होती हूँ मैं ट्रेडिशनली, सो और मंदिर जाना, पूजा जाना एंड ऑल. प्लीज आई एम सो सॉरी, बेयर विद द बैकग्राउंड नॉइज. ओके, सो दिस इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा सिंदूर. एंड वी हैव मामा अर्थ का लिपस्टिक. मेरे पास लिपस्टिक की मेरे पास मेकअप का एज सच कलेक्शन नहीं है, बिकॉज आई डोंट प्रेफर टू गो विद द मेकअप जोन. मैं स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस करती हूँ एंड ईट हेल्दी एंड दैट्स इट. ओके, फोकस जो वीडियो है उस पर फोकस करें. ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले आती हूँ ना बीच बीच में से कभी. ओके, सो नेक्स्ट इज एट्यूड हाउस का टेंट. ओके, ये इतना मस्त टेंट है ना, I do not have words, right? It's just like put it on your cheek, put it on your lips. It will last at the end of the day, because जब भी मैं इसे ऑफिस लगा के जाती हूँ शाम तक, भाई साहब शाम तक जैसे का तैसा. Try once. And then we have 2 mini lipstick from Nykaa. This is brand is Nykaa itself. Brand itself is Nykaa. Okay, and then we have the eyebrow pencil. This is from ब्रांड ही वैनिश हो गया. देख सकते हैं आप, इनका प्रिंट बेहद ही लो क्वालिटी का है, नहीं तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए. ओके, व्हाटसोएवर, eyebrow pencil. Then we have toner in the house. This is from the Mom Co. Natural ceramide face toner with rice water. See? Okay. Then we have Pit cream. This is from Plum again, just like my body oil. This is a Pit cream. Sometimes I prefer to use roll-on, sometimes Pit cream, but इसके आगे कोई नहीं टिक सकता. And then we have under eye cream. इसका तो मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं, कहाँ से पैकिंग ही देख लीजिए आप. See? Oh, that's it. Okay. So that's it for today. These all I have restocked from Nykaa. I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मज़ा आया हो. अगर नहीं आया तो comment me down. I'll try to rectify my errors. Okay, we'll see you. कौन है मेरे साथ?
I'll see you in next video or shorts. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.